Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे में मैग्नेटिक वर्क विषय रे पढिबा। देखो तुम जानिछ जेतेबेले आमे गोटे मैग्नेटिक मटेरियल नेला सेथिरे थिबा जो मैग्नेटिक डाइपोल्स माने रैंडमली ओरिएंट हेकी थांती इतस्तत भाव रे जेतेबेले गोटे आमे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिबा ताहले सेही जो छोट छोट डाइपोल माने रैंडमली ओरिएंट हेकी थिले कोन हबो ना दे विल बी अलाइंड in the direction of that magnetic field, and in this process of magnetization of the material some work has to be done by the applied magnetic field when a magnetic material is placed in a magnetizing field. Suppose field strength amane gala h, tale magnetic induction b vector b will be developed in the material in the sum of magnetic induction in free space b0, okay, free space by vacuum ray, which is caused by magnetizing field h and induced magnetic induction bm, which is caused by magnetization of the material. ताले mathematically हमें याको relation रे कहि परिबा vector b is equal to b0 plus bm, पुणी b0 को हमें रिप्लेस करि परिबा to be equal to mu 0 h. ताले आ गोटे जिंस from the definition of intensity of magnetization m केतरा बही रे याकू कैपिटल I भी लिखा ही था एठी हमें जो bm अछि ओके induced field this is equal to mu 0 m ओके ताले बे ए दुई वैल्यू को जदि हमें b0 आउ bm रो वैल्यू पुट करिला ताले वेक्टर b becomes equal to mu 0 h plus m एठी mu 0 रो वैल्यू कोन एटा होची तमरा permeability in free space यार वैल्यू 4 pi into 10 to the power minus 7 असे. Now using the first law of thermodynamics to a magnetic system, okay, because हमको magnetic work बाहर करिबार अछि. So first law of thermodynamics कहूची कोन dq equal to du plus dw, okay, एठी q u आउ w हेगला heat, internal energy आउ total work done by the system for any quasi static process. Now ये जो total work done टा कहूची w, this includes not only the usual mechanical work done which is pdv माने p होची एठी pressure corresponding to a change in volume dv, but also ता सहित गोटे magnetic work भी एठी include हेकी अछि dwm. Subscript m stands for magnetic, which is associated with the changes in the field strength h. So a जो dwm यार हमें expression का वो derive करिबा, okay, for the value of this magnetic work. Suppose the small work, which is the small amount of work done dw in order to align the magnetic dipole per unit volume in a magnetic field, याको हमें लिखि परिबा dw to be equal to minus bdm, okay. So एटा डायमेंशनली ठीक अछि ना नहीं एटा तुम ऊपर टास्क दिली चेक करिबो. So b रो वैल्यू हमें जानि छु mu 0 h, okay, mu 0 h dm. अच्छा एठी जदी वेक्टर सिंबल देला ताले एठी गोटे डॉट प्रोडक्ट हबो, ओके. आ नेगेटिव साइन एठी काहे के आछि, it is referring that this work is stored as the potential energy of magnetic dipole in a uniform magnetic field. आउ ए जो ऊपर एक्सप्रेशन टा हमें देखिबा को पाउछु, it is representing the work which is required to increase the total intensity of magnetization of the material by an amount dm per unit volume, okay.
अच्छा ताले एबे टोटल वर्क डन टा हे जिवो इंटीग्रेशन जेतेबेले आमे ए dw को करूछु ओके एंड दिस टोटल वर्क डन मे बी ऑन और बाय द मैग्नेटिक मटेरियल सो wm where m stands for magnetic यार वैल्यू हला इंटीग्रेशन ऑफ dw dw रो वैल्यू पुट कला लिमिट सेट करबा एठी आमे dm पई m1 to m2 सो यार वैल्यू आसिला माइनस म्यू जीरो एच m2 माइनस m1 एठी जो आमे लिमिट सेट करछु m1 m2 एटा होची इनिशियल और फाइनल मैग्नेटाइजेशन पुणी आमे जानिछु सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रु जे dq रो वैल्यू हुए tds एठी t हेगला टेम्परेचर आउ s हेगला एंट्रोपी एटा जानिछु सो याको आमे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रे पुट करबा जति ताले tds रो वैल्यू हेगला इक्वल टू एठी dq जगह रिप्लेस कर देला du को एज इट इज लिखिला ए क्वांटिटी टा होची dw ओके dw जगह रे एठी हमें मेकानिकल वर्क डन और मैग्नेटिक वर्क दुइटा को ऐड करिछु ओके हियर द लास्ट टू टर्म्स रिप्रेजेंट द टोटल वर्क डन बाय द मटेरियल इन एनी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सो एटा हमें एक्सप्रेशन पाई गला मैग्नेटिक वर्क रो लेट अस डिस्कस अ स्पेसिमेन प्रॉब्लम जो थे कि हमें गोटे टॉरॉयड रो एग्जांपल लेबा व्हिच इज हैविंग n क्लोजली स्पेस्ड टर्न्स our cross sectional area हेगला capital A and this toroid is connected with a battery along with a variable resistor ताले एठी magnetic work केते हेबो क्वेश्चन पचाउछि दिस इज द फिगर as you can see toroid रे एठी n संख्यक टर्न्स अछि closely spaced this is the battery source this is the resistance this is the current flowing okay simple circuit गुटे so एठी magnetic work रो expression बाहर करबा को कहउछि so let us find this solution सो बैटरी रू देखिले जना पड़ुची जे एटा गोटे डीसी सोर्स सो एठी जो करंट आई तळे आमे देखिला सेटा होची गोटे डीसी करंट सपोज ए डीसी करंट ता पास करूची थ्रू द वायर व्हिच विल सेट अप अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन B over the cross section of the toroid then the change in magnetic induction due to a variable resistance जोटा तळे अटैच हेकी अछि this change will again introduce an induced EMF in the circuit as per Faraday's law. तेणु induced EMF रो वैल्यू टा हे जिवो as per Faraday's law of electromagnetic induction E is equal to minus NA dB by dt. Okay, Faraday's law होची this one E equal to minus d by dt of phi. Phi हेगला magnetic flux which is the product of B and A. B हेगला magnetic field A हेगला area. ताले induced EMF as per definition याको हमें लिखि परिबा E equal to dw by dq or dw is equal to E dq. This dw is the magnetic work actually. E रो वैल्यू एबे हमें जोटा ऊपर पाइतला ताको रिप्लेस करिबा सो इट नेगेटिव साइन टा आसुची इट इज ड्यू टू द Lenz rule or Lenz law okay because it will Lenz law हिसाब रे it will oppose the very cause to which it is due so it is जो dq by dt यार वैल्यू हमें जानिछु the rate of change of charge is nothing but your current I so it is जो dw ऊपर जो देखुछ this one एठी db टा बाहर को आनी आसिला dq को ए ऊपर को नहीं आसिला ओके सो dw रो वैल्यू आसिगला NAIDB okay अच्छा we know that the magnetic field intensity H inside a toroid winding in which the current I is passed याकू हमें expression for the toroid case H रो वैल्यू आसे NI by L okay NI by L हेगला एठी length of the wire ताले H रो वैल्यू एठी तळे ऊपर कोन करबा हमें A को मल्टीप्लाई कर देबा सो A into L is nothing but V which is the volume okay now substituting the value of NAI which is coming out to be HV ताले dw रो वैल्यू हेगला HV dB so गोटे यूनिट वॉल्यूम पाई एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन will become HDB V रो वैल्यू हमें 1 पके देला because unit volume now the magnetic induction B is related to the magnetic intensity H and intensity of magnetization M जोटा ऊपर हमें फर्स्ट देखुतला B रो वैल्यू म्यू 0 H plus M आस्तला so म्यू 0 एठी permeability in free space और vacuum ताले dw रो वैल्यू HD डिफरेंशिएट करबा एठी जो B रो वैल्यू हमें पुट करिकी so म्यू 0 H गोटे टर्म रे आसीजो
आ गोटे आसीबो म्यू 0 m. ओके सो एई जो एक्सप्रेशन आमे पाइला इट कंटेन्स two terms. First term representing the work which is required to increase the magnetic field per unit volume in free space by an amount d of mu 0 h. A second term kono, it is actually in fact the magnetic work which is representing the work which is needed to increase the total magnetization of the material by an amount dm. Okay, thus small change in magnetic work याको आमे लेखि परिबा dw equal to mu 0 h dm. Okay, so total work done, total magnetic work यार जो एक्सप्रेशन हमको बाहर करिवार अछि, अगेन सेम जिंस ए dw को इंटीग्रेट करिवार अछि, लिमिट सेट कला एठी कोन करिबा सेठी ऊपरे m1 to m2 करथिला एठी कोन करिबा mi to mf करिबा, I for initial, f for final. ओके सो याको यदि इंटीग्रेट करले सिंपली यार एक्सप्रेशन आसीगला mu 0 h m final minus m initial, which is the required expression for the magnetic work done in case of this toroid. Okay. Thank you.